is Vaishali Tyagi and welcome back to my YouTube channel. It's a beautiful morning from Gangtok and I'm feeling so happy to be here. So आज technically मेरा second day है Gangtok में, but I'm counting it as first because कल तो कुछ किया ही नहीं and आज हम लोग घूमने जाएंगे. We'll do the local sightseeing of Gangtok today and also अभी मैं एक वीडियो पूरे प्रॉपर्टी की बनाने वाली हूँ where I'm staying. So first of all, let's just go and get ready. Hey everyone, so we are now in Gangtok and we are going for the sightseeings now local and बहुत लेट हो चुके हैं 11:30 तो यहीं बज गए हैं 2-4 करेंगे और फिर MG रोड जाएंगे so we'll Hey, so let's start today's journey of exploring Gangtok and सबसे पहली destination जहाँ हम जा रहे हैं वो है the Banjakri Waterfalls. It is my highest recommendation in Gangtok की मतलब अगर आप Gangtok आ रहे हैं तो इस जगह को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा. I think this was the best place that I went to and it is the highest on my recommendation list for you guys. ये generally added नहीं होती है packages के अंदर but इस place को ज़रूर add कराइएगा. This place does not just have a waterfall but आप morning में यहाँ lush greenery में nature walk भी कर सकते हैं to start your day on a happy and positive note. And this is the beautiful waterfall. Show me something I haven't seen before. 'Cause I'm tired of the same boats, the same show. There are also some adventure activities to do here like zip line and rope walking. There are some statues of the tribes also that used to be here. Guys, we were at Banjakri Falls in Gangtok. कैसा experience था? मैं कोशिश के लिए उसे थे. It is a beautiful waterfall right there. इसकी 50 रुपए की एंट्री टिकट है एंड जो टैक्सी भी आप आते हो उसकी भी आपको 50 रुपए की टिकट कटवानी पड़ती है पार्किंग की एंड बाकी सब यहाँ पर बहुत ही ब्यूटीफुल है. इट्स टू मच ग्रीन एंड इट्स टू मच सुंदर. समथिंग आई लव हियर इज दैट डस्टबिन की जगह यहाँ पे ये नेचुरल यूज होते हैं. जूट बास्केट विच इज वेरी ग्रेट, वेरी इको फ्रेंडली एंड वेरी ग्रेट. आई लाइक इट. आओ रिया त्यागी, नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे जाना है. ऑल्सो यहाँ पे 2-3 सुंदर रेस्टोरेंट्स भी है जहाँ पर आप ब्रेकफास्ट या लंच कर सकते हैं एंड द रेस्टोरेंट्स वर क्वाइट एस्थेटिक. द व्यू वाज क्वाइट अमेजिंग एंड आई थिंक द फूड वाज आल्सो अमेजिंग. So our second stop on the way is the Namgyal Institute of Tibetology. It's like a museum. 25 rupees की entry ticket है. It's quite normal. So let's check it out.
our second व्यू पॉइंट वॉज दिस. अंदर वीडियोग्राफी एंड फोटोग्राफी अलाउड नहीं है तो वो हमने नहीं किया, बट द प्लेस वॉज अमेजिंग एंड काफ़ी रिच हिस्ट्री है यहाँ की. एंड there's a lot of tantric things involved which were very, like, I was very curious. There were actual human bones जिनसे ritual होते थे and they've shown all of that. So like I would say कि अंदर जाके 25 rupees की ticket, I think you should go and check that out. It was amazing. अगला स्पॉट वॉकिंग डिस्टेंस पे है इंस्टीट्यूट से एंड दिस ब्यूटिफुल प्लेस इज़ दो ध्रुल चौटन विच इज़ अ स्तूपा एंड इज़ लोकेटेड ऑन अ हिल. नमस्ते मेरे प्रिय दर्शकों, आए हैं मोनेस्ट्री के अंदर जो कि बहुत ही खूबसूरत है, पर हम इसके अंदर नहीं जाएंगे. हम बाहर से ही आपको इसकी खूबसूरती दिखा देंगे. One thing I totally loved about Gangtok was how well the traffic management is here. Like 3 दिन में बहुत कम honking सुनी है मैंने यहाँ. And also कोई line cut नहीं करता. Everyone move in their own lane. Delhi जैसे areas में रह के you kind of start to respect these things. The next stop is Gangtok Ropeway. इसकी टिकट अराउंड 100 to 150 के बीच है and you can get an amazing aerial view of the whole city of Gangtok from here. And I actually recommend it if you have the time for it. Otherwise, you can also drop this. Fifth place on our list is Flower Exhibition Center. It is at one end of the Ridge Park, which we didn't have the proper time to explore. This center has an amazing collection of various different flowers. If you are a flower lover, then this place is for you. Best time to visit is between March to June when the orchids are in full bloom. You can also buy some seeds from here as well. मुझे बेस्ट पार्ट इस जगह का इसके आउटडोर्स लगे हुए ब्यूटीफुल पिंक एंड रेड रोजेस के ट्रीज थे विद बेंचेस. इट मेड दिस प्लेस अ परफेक्ट फोटो स्पॉट. Next stop is Ganesh Tok. This is a Ganesh temple around 7 kilometers from Gangtok city at an altitude of 600 meters.
everyone, we are at Ganesh Talk Temple, जो कि यहाँ का one of the most beautiful temple है, not just because of the temple but also because of the view, because यहाँ से पूरी गैंगटॉक सिटी दिखती है. As you can see, it is very beautiful. क्योंकि सनसेट होने लगा था, वी रश टू आवर नेक्स्ट डेस्टिनेशन, दैट वाज ताशी व्यू पॉइंट, जो कि गणेश टॉक से काफ़ी पास है. So we are at the last stop of our destination, that is Tashi Viewpoint, and right now क्या है कि यहाँ पे बहुत cloudy है, so हमें ज़्यादा कुछ नहीं दिख रहा है, but there are mountains over there, बहुत सारे mountains हैं उधर, but दिख नहीं रहे हैं. गैंगटॉक वापस आते हुए आप क्विक फोटो स्टॉप ले सकते हो एट द भक्तंग वाटरफॉल्स, जो कि रास्ते में ही पड़ता है. As we returned to Gangtok, it started to rain a little and गजब की भूख लगी थी सुबह से भाग दौड़ करते हुए, so we went straight to MG Road. MG रोड की वाइब काफ़ी अच्छी है एंड देर आर अ लॉट ऑफ ब्रांड्स एंड शॉपिंग ऑप्शंस हियर. यहाँ का मिनीसो एंड मोमोसो बहुत बढ़िया है, चेकआउट ज़रूर करना. फूड के भी काफ़ी ऑप्शंस अवेलेबल है, फ्रॉम कोरियन, चाइनीज, जापानीज टू नेपाली, नॉर्थ इंडियन एंड साउथ इंडियन एज वेल. आई चोज द लोकल कैफे फॉर डिनर एज मैंने एक गैंगटॉक के लोकल ब्लॉग में काफ़ी तारीफ सुनी थी इस रेस्टोरेंट की. I loved कि इन्होंने hot drinking water offer किया as it was quite cold outside. We tried the hot chocolate pizza and Tibetan style sandwiches. There was also a heart-to-heart question game you can play with your friends. Food and ambience दोनों ही बहुत बढ़िया थे and I totally recommend this place. इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं. थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग एंड शोइंग योर लव. नेक्स्ट वीडियो विल बी ऑल अबाउट चांगू लेक एंड बाबा मंदिर, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट एंड सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड. बाय.